I'm waiting. Actually, few of the students, they are saying they are not able to join. So let's wait for 1 minute more. Okay. So my voice is audible to you? Yeah, ma'am. Yes, ma'am. So in the last class we studied about ADT. We will study one notation system, that is asymptotic notation. Sometimes when you मैम थोड़ा ब्रेक हो रहा है. हाँ थोड़ा ब्रेक होगा, शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है, थोड़ा वेट कर जाओ, सही हो जाएगा. तो maybe in C you have studied that whenever you were studying some searching algorithms, some sorting algorithms, then some complexity was written, na? Time complexity. Suppose if for linear search it was given like this, for binary search it was given like something else. So some concept of order of n, this concept was there. Now this order of n we refer to as asymptotic notations. Now where does this asymptotic notations come? What is the meaning of n? In order to understand that, first we need to start from what is time and space complexity and how do we denote or represent the time and space complexity. Okay, so when we want to analyze any algorithm, so analyzing. Hello, ma'am. हाँ बोलो. Ma'am, your voice is not clear. क्या करे बोलो तो. Jio 5 का No, ma'am, it is all right, ma'am. नेटवर्क भी फुल अरे नहीं स्पीड फट रहा है यार. मैम आवाज नहीं आ रहा ठीक से. जिसको आवाज आ रहा है वो लोग सुने और जिसको नहीं आ रहा है वो लोग रिकॉर्डेड मटेरियल देख ले और क्या बोलेंगे. Because my signal strength is full tower, it is in green only, so signal तो मेरा ठीक है. अगर आवाज आ रहा है तो क्लास में रहो, कोई दिक्कत नहीं है. मे बी आज जूम का कुछ इश्यूज होगा, मे बी शायद, और जिसको आवाज नहीं आ रहा है वेट करके भी, सो क्या ही करे, वो लोग रिकॉर्डेड क्लास देख लेंगे. ठीक है. सो analyzing an algorithm means what? Analyzing an algorithm means that we determine the amount of resources which is needed to execute the algorithm. By amount of resources we mean what? We mean the time and the memory. How much time is required to execute this algorithm? How much memory space is required to execute this algorithm? These things we determine when we analyze an algorithm. Now, algorithms, when we build an algorithm, we do not build it to work specifically for 2 times or 3 times. Now, we build the algorithm for n number of items. So there is an algorithm so which will be designed to work with any arbitrary number of inputs. Sometimes the user wish to give the value of n as 5. Sometimes the user wish to give the value of n as 20. Sometimes the user wish to give the value of n as 32. So whatever the user will feel at their runtime, he or she may enter the value of n.
but I cannot restrict my program to run for typical 10 time or 20 time. I need to run for any arbitrary, I need to design my algorithm so that it can run for any arbitrary number of times. Now, this arbitrary number of inputs is known as n. We refer to it as n, right? So the efficiency or the complexity of an algorithm is always stated either in terms of time complexity or in terms of space complexity. But we generally always tend to follow the time complexity concept. Now, why is that? Because in today's time is money. We all know that. So whenever some space issue arises, we always have that amount of money to buy some external space or to buy or to upgrade the space of my current laptop or workstation or anything. But we always want that I need to get something which will be executing and give me the result in the minimum amount of time. So time complexity is the factor or is the topic which we will be more focusing on. Space complexity, actually, we don't bother about it so much. But yes, definitely space complexity concept is there, but we are much bothered about time complexity issues. Now, what is then the time complexity? The running time. अभी आवाज ठीक आ रहा है ना कि अभी भी ब्रेक हो रहा है? No, I'm breaking still. तुम्हारा आवाज भी हमें ब्रेक करके आ रहा है. पता नहीं ये मेरा नेटवर्क का इशू है या तुम लोग, आपका आवाज क्लियर है. तुम लोग का एंड का मतलब Yes, पता नहीं चलता है ना किसका इशू क्या है. Ma'am, your network is so good. ठीक है, अगर Your नहीं voice है is तो, clear to us. अगर नहीं है तो जिस पोर्शन में समझ में नहीं आया थोड़ा रिकॉर्डेड लाइव मतलब रिकॉर्डेड क्लास का वो देख लेना, फिर वो समझ में आ जाएगा. सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम किसको बोलते हैं कि एक प्रोग्राम एक सर्टेन इनपुट साइज के लिए रनिंग टाइम क्या होगा. अब ये इनपुट साइज हम लोग n पकड़ के चलेंगे हमेशा कि मेरा n इनपुट साइज के लिए मेरा ये प्रोग्राम इतना टाइम लेगा रन करने के लिए. अब n 100 होगा या 200 होगा या 4000 होगा वो मेरा हेडेक नहीं है. I must be explaining the function or the time which is required to run this program in the order of something. Suppose हम ये स्टेटमेंट लिखे, मतलब जब मेरा n 10 होगा ये मेरा टाइम 10 स्क्वायर लेगा, जब मेरा 10 100 होगा ये मेरा टाइम 100 स्क्वायर लेगा. So always the input size, I am representing the function of the input size as a certain function where with respect to the input size, n is my input. अब रन टाइम में n जो वैल्यू लेगा उस हिसाब से मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो वैल्यू लेगा. But I cannot represent the time complexity as a constant. I cannot do like this. No, it has got no meaning. I need to always represent the time complexity as a function of the input size. कि input size के हिसाब से मेरा कितना time लगेगा. Suppose I have a program which will be executing and giving me the result in suppose n square time. मेरा अगर input size 2 है तो मेरा टाइम लगेगा सपोज 4 सेकेंड्स. मेरा अगर इनपुट टाइम 10 है तो मेरा टाइम लगेगा 100 सेकेंड्स. सो डेफिनेटली आई विल ऑलवेज डिपेंड ऑन द इनपुट साइज. व्हाट इज द इनपुट साइज? इनपुट साइज के हिसाब से
जो फंक्शन डिक्लेयर होगा उस हिसाब से मेरा टाइम बढ़ेगा या घटेगा. सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स दैट the running time of a program, which is basically always designated as a function of the input side. Similarly, what is the space complexity? Simple hai, space complexity is the amount of computer memory that is required during this program execution, but also again as a function of input size. This thing all will be declared as a function of input size. और ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ना एक अप्रोक्सीमेशन है. दिस इज नॉट लाइक ये ही लगेगा, इतना तक लग सकता है, एक अप्रोक्सीमेशन. तुलसी यार साफ कीजिए ना मैं. मैम वॉइस नहीं आ रहा. बात नहीं कर रहे, लिख रहे हैं तो. Okay. So to put it through, this is the basic to definition. Now, ये हम लोग जो बोलते हैं as a function of input size, हम लोग ये गिनेंगे कैसे? We will be calculating it by the number of machine instructions. When I am writing certain lines of code, how many lines of code I am writing? Or suppose एक logic lines of code मतलब printf scanf statement को नहीं, जो लॉजिक पोर्शन है उस लॉजिक पोर्शन रन कराने के लिए हाउ मेनी नंबर ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शंस दैट प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटिंग, दैट इज व्हाट इज नोन एज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. ठीक है. सो सपोज मेरे पास एक एरे है. सपोज मेरे पास एक एरे है and we are interested in finding the time complexity. Now, can anyone say that when we are talking about time complexity, what is the time complexity we are interested in? Best case, worst case, or average case? What is the time complexity we are interested in? हम लोग जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग कौन सा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को लेकर इंटरेस्टेड शो करेंगे हमेशा? What is our motto? To find the best case time complexity or the worst case time complexity or the average case time complexity? Ma'am, worst case. Huh? Worst case. Worst case, right? Very nice. So we are always interested in finding the worst case time complexity. Now, why is that? Because whenever we are implementing an algorithm or we are developing an algorithm, a new algorithm or something, we will always be interested in finding out what is the highest maximum possible time that this algorithm may take. उससे ज्यादा कभी होगा ही नहीं, उससे कम होगा तो मेरे लिए और भी सही है, पर what is the worst केस में अगर जाएंगे, what is the maximum time this algorithm can take? तो हम लोग हमेशा in practical world we are always interested in worst case. Sometimes what happens is the best case or the average case, it sometimes सेम रिजल्ट देते हैं. कभी कभी जिस हिसाब से हम लोग एलिमेंट्स लेते हैं और हैंडल करते हैं उसके ऊपर भी कभी कभी ये बेस्ट केस वर्स्ट केस निर्भर करता है.
Suppose if this is an array and if I want to search one element in an array, what will be the best case scenario? The best case scenario will be that whatever element I am trying to search, it is available in the first place only. So the number of comparison is only one, right? What is the worst case? The worst case is that the element which I am trying to search, either that is present at the last position here or that is not present in the array at all. Because in either of the cases, I need to do n comparison. See, first search known, known. So like this, always either even if the element is present at the last position or the element is not present in my array, in both the cases, I need to do n number of comparisons. Now see, this is where I am representing my time complexity in the order of n, not in the order of number of elements. Not like this, here I have taken 8 elements, so I am telling order of 8. No. Worst case will always be my element will be at the last or not at all. So if I am taking 100 elements, 100 number of searches I need to do. So see, I am depicting my time complexity as a function of the input size, right? And what is the average case? Suppose if I want to search for an element, if I am getting it at a position which is halfway from here, halfway from the end, halfway from the beginning, halfway from the end, right? So that will be my this. So this is the concept about what we talked about: best case, worst case. You will see your topic is there, like what is the worst case running time, what does it denote, what does the best case running time of a array denote, what does the average case running time denotes. So this denotes what? This simply denotes the behavior of an algorithm with respect to the worst case scenario. So if it is a normal linear search example, if it is a worst case scenario, what is the behavior of my algorithm will be that I always need to do n number of searches, n number of comparisons. So worst case running time is nothing but it will denote the behavior of the algorithm with respect to the worst possible case of the input instances, right? So always worst case is an upper bound on my algorithm. Why it is an upper bound? Because सबसे खराब में यही होगा, इससे ऊपर और जाएगा नहीं, तो वो ही मेरा upper bound बन जा रहा है. So worst case is always an upper bound on the running time of algorithm, whereas best case is always a lower bound on the running time of any input, right? So having the knowledge of this worst case running time, it will give us an assurance that the algorithm will never go beyond this limit. So worst case always gives an upper bound on my algorithm. Up to this, is this thing clear? Up to this portion. Okay. Another is a concept is time and space trade-off. I mean, किसको चूज करे, किसको ना करे, ये जो एक always एक दुविधा है, किसको चूज करे ना करे. What is this trade-off all actually about? So it is, ये तो पता ही है that the best algorithm to solve any particular problem which I have at my hand will no doubt be the one that will require less memory space and will take less time to complete its execution. We all know that. But practically ना designing such an ideal algorithm कोई आसान काम है नहीं, because in order to solve a particular problem, we already know that there can be more than one number of algorithms. To solve any problem, we can solve that problem following various algorithms or various ways we can do that. So
ये होता है कोई मेमोरी स्पेस कम लेता है तो कोई सीपीयू टाइम ज्यादा लेता है, कोई सीपीयू टाइम कम लेता है तो कोई मेमोरी स्पेस ज्यादा लेता है। सो एक के लिए दूसरा सैक्रिफाइस करना, यही यही that is the concept of time space trade-off among the different algorithms. Suppose I have a problem, and to solve that problem I have algorithm 1, algorithm 2 and algorithm 3. Suppose if I choose this algorithm, ये time बहुत ज्यादा ले रहा है, space बहुत कम ले रहा है. If I choose this, ये time बहुत कम ले रहा है but space बहुत ज्यादा ले रहा है. If I choose this, ये time भी ज्यादा ले रहा है, space भी ज्यादा ले रहा है. Suppose 3 type of ways I have, or 3 type of algorithms I have. So which one should I choose in order to reach at this problem, solve this problem? This is where the time space trade-off. Trade-off का मतलब है bartering system. क्या देके क्या लोगे? तुम टाइम देके स्पेस को लोगे या स्पेस देके टाइम को लोगे या दोनों ही दे देना है, क्या देना है? That is where the time space trade-off concept comes. If space is a big concern जो हम कर रहे हैं वहां पे, then जो space कम रह रहा है उसको लेना पड़ेगा. On the contrary, if time is a big concern, जो चीज हम बना रहे हैं वहां उस सिनेरियो में, then टाइम जहां कम है वो ही लेना पड़ेगा. स्पेस भले ही ज्यादा हो, डबल हो, उससे कोई मतलब नहीं है. तो मेरा जो सिनेरियो रहेगा उस सिनेरियो के बेसिस में मेरा तब डिसाइड करना रहता है कि हम लोग कौन सा वाला एल्गोरिदम को या फिर कौन सा वाला प्रोसेस को हम लोग चुनेंगे, फॉलोइंग द टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ. इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? Yeah, ma'am. Now these time and space complexities, it can be expressed as a function of n, where we all know that n is our input size. So for a given instance of a problem which needs to be solved, n is our input size. So when we want to predict the growth of the complexity as the input size of the problem will increase, so then we need to define what we know as the notations, right? So in computer we do what? We write programs, and before writing programs we write the algorithms. So suppose we have a problem, we first write the algorithm. From algorithm we go to the programming part. So in order to solve a problem, many algorithms can be there. So we need to find a good one in terms of the memory and in terms of the time. So this designing and this analysis of algorithm is what is the selection of the best one, of the optimized one. We are always, this designing and analysis of algorithm is nothing but selecting what is the best for us. And in order to select and design, we need to study something which is known as asymptotic notations. Okay. इस asymptotic notation से पहले हम एक छोटा सा चीज बोलना चाहेंगे. Okay. Suppose I am writing one line. Suppose one statement I am writing. Suppose this is the line of code which I have written. So we need to calculate the efficiency of an algorithm, and for doing that we need to do first. We need to first determine the number of times the statements in the loop it will be executed. Suppose I have this condition and I have, after that I have some statement block. Several lines of codes are there. Suppose statement block.
So suppose this is my condition. Now what is the loop factor here? What is the loop factor? माने condition क्या है? मेरा कंडीशन नंबर ऑफ चेकिंग्स कितना होगा? मेरा कंडीशंस क्या है? 0 से लेके मेरा 100 के नीचे जाएगा और एक एक करके बढ़ेगा, राइट? सो कितना बार चेकिंग होगा मेरा? ये अगर एक लीनियर लूप हम लोग फॉलो करते हैं तो मेरा चेकिंग कितना बार होगा? हाउ मेनी टाइम्स? एनीवन? Anyone? If this is the line which I am writing, and what is the concept? The concept is 0 से लेके मेरा last तक चलेगा 99 तक, right? तो इस एग्जाम्पल के लिए मेरा कितना बार मेरा लूप चल रहा है? How many times? My loop is getting executed 100 times now? Yes or no? Yes or no? Yes. So if my loop is getting 100 times, and suppose I am discarding this 100, I am writing 200, then how many times my loop will be executed? 200 times. 200 times. मतलब मेरा जैसे जैसे n चेंज हो रहा है वैसे वैसे मेरा नंबर ऑफ इटरेशंस डायरेक्टली बढ़ रहा है. So if this is a linear loop, what is a linear loop? एक simplest loop जो होते हैं, एक करके इंक्रीमेंट जो होता है, simplest of all loop. So in linear loops, the way my number of elements will increase, that way my time will also increase, directly proportional. So for linear loops, I may denote my function टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एज ऑर्डर ऑफ n. हम लोग ऑर्डर ऑफ n के हिसाब से डिनोट कर सकते हैं. मेरा n 100 होगा तो 100 इटरेशंस, मेरा n 200 होगा तो 200 इटरेशंस, मेरा n 300 होगा तो 300 इटरेशंस. yes or no? I can use this functioning concept for linear loops I am talking about, okay? Not for the logarithmic or quadratic loops. Linear loops, simplest linear loop के लिए. So हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, मेरा एकदम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, है ना? सपोज लीनियर लूप के जगह मेरा लोगारिथमिक लूप का कॉन्सेप्ट है. लोगारिथमिक लूप्स मतलब Ma'am, I am not getting. हाँ? Ma'am, I am not getting. लीनियर लूप में क्या होता है? लीनियर लूप में अगर मेरा i प्लस प्लस था और i माइनस माइनस था, मतलब मेरा डायरेक्टली मेरा लाई करेगा. इट विल ऑलवेज बी अ डायरेक्ट लिंकेज. मेरा जो n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उस हिसाब से मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा या घटेगा. लॉगरिथमिक लूप्स में क्या होता है? तुम अगर ध्यान से देखो, ये वाला तुम्हारा इंक्रीमेंट्स है. अगर मेरा इंक्रीमेंट्स मल्टीप्लिकेशंस में होता है या फिर मेरा इंक्रीमेंट्स डिवाइड्स में होता है, अगर इट इज मल्टीप्लाइड और इट इज डिवाइडेड, तो हर एक इटरेशन में मेरा जंप करके नेक्स्ट वाले में चले जा रहे हैं. इस टाइप ऑफ लूप को हम लोग क्या बोलते हैं? लॉगरिथमिक लूप्स. वी ऑल नो दैट. नाउ अगर मेरा ये वाला कंडीशन है, सपोज मेरा i 1 से स्टार्ट करेगा और 1000 के नीचे तक जाएगा, तो हर एक टाइम में मेरा i into 2 हो जाएगा. ठीक है ना?
हर एक टाइम में मेरा I इंटू 2 हो जाएगा। देन ये लूप मेरा कितना बार एग्जीक्यूट होगा? फर्स्ट I के लिए, I1 के लिए होगा, देन 2 के लिए होगा, देन 4 के लिए होगा, देन 8 के लिए होगा, देन 16 के लिए होगा, देन 32 के लिए होगा, 64 के लिए होगा, देन 128 के लिए होगा। देन ऐसे करके तुम देखोगे बिटवीन 1 to 1000 दिस लूप विल रन ओनली 10 टाइम्स, बिकॉज ये तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहा है ना इंटू 2 करके हर एक बार को। फर्स्ट I1 के लिए 1 is less than 1000, yes it is true, and all the statement blocks will be executed. Next when it will go back here, I मेरा 1 था, 1 into 2, अभी 2 के लिए होगा, 2 is lesser than 1000, yes true, statement blocks executed. 2 2 अभी 4 हो गया, 4 is lesser than 1000, yes it is true, statement blocks executed. So like this we will see that then the loop will be executed only 10 times and not 1000 times, because in each iteration the value of I it doubles. Now if I use this loop, acha all the students who are present, please write your name in the chat box, and just name, please do not write that roll number, registration number, no, only name please. Okay, so suppose I am writing another loop. Suppose my loop is like this. I 1000 से स्टार्ट होगा, हमेशा चेकिंग करेगा whether it is less than or equal to 1, और इस दौरान वो हमेशा हाफ होते रहेगा. The other example I am talking about multiplication. Now this is another loop where I am using the dividing concept. Now in this loop also it will start from 1000 first, right? Then after 1000 it will run for 500. 500 is lesser than 1, so true, it will enter the loop. Then after that it will run for 250. 250 is lesser than 1, yes, it will enter the loop. Then after that it will run for 125. Then after that it will run for some other decimal value. So like this, what happens is this time also we will see that the loop will run only 10 times. So number of iteration is a function of the number by which the loop controlling variable, that is I, is divided or multiplied by. So when n was equal to 1000, the number of iterations log of what gives us 10? Anyone? Or suppose हमेशा मेरा जब ये लूप 1000 के लिए हो रहा है तो हमेशा मेरा लूप ये कितना बार चल रहा है? 10 बार चल रहा है ना. So if I use the log concept, log of what gives us approximately value 10? Log of 1000. Log of 1000 gives us approximately value of 10. So 1000 मेरा क्या था? मेरा इनपुट साइज मैक्सिमम था ना 1000. तो हम लोग इस फंक्शन को कैसे डिनोट कर पाएंगे? इस फंक्शन को हम log of n के थ्रू डिनोट कर पाएंगे, yes or no? हाँ मैम, यस मैम. ठीक ना. ये आज फर्स्ट वाला दिन है ना, इसलिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, मतलब उतना प्रेशर देके मत सुनो.
हम बस जो बोलते जा रहे हैं एटलीस्ट वो समझ में आ रहा है कि नहीं, उस पे ध्यान दो। हम लोग तो पढ़ेंगे इसके बाद असिम्प्टोटिक नोटेशंस क्या है क्या नहीं है, एक डिटेल्स में पढ़ेंगे, सम्स करेंगे। हम बस एक ओवरव्यू देना चाह रहे हैं पहले से कि एक ही फंक्शन को कैसे मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, उस हिसाब से पहले एक फंक्शन को हम ऑर्डर ऑफ n में रिप्रेजेंट करते हैं। फिर अलग टाइप ऑफ, वही फॉर लूप सेम है पर फॉर लूप के भीतर मेरा कंडीशंस अलग हो जाने से वही फंक्शन को हम कैसे log n में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट्स। मतलब लीनियर लूप्स में एक कॉन्सेप्ट हम लोग यूज कर पाते हैं, लोगरिथमिक लूप्स के लिए एक कॉन्सेप्ट यूज कर पाते हैं। देन देयर कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ नेस्टेड लूप्स, लूप के भीतर लूप, उसको हम लोग फंक्शन कैसे डिनोट करते हैं, उस फंक्शन को भी तो हमें ऑर्डर मतलब इन द रिस्पेक्ट टू इनपुट साइज डिनोट कर रहा है। सो दिस इज द वे ऑफ हाउ वी कैन डिनोट different algorithms depending on the logic that is used, different input size